Very good evening, all of you. Kindly confirm everything is fine from my side, audio, video, everything. Okay. So we can start the session. So चंदन सर भी आ रहा है, so बीच में सर भी ज्वाइन करके आपको इनपुट दे रहा है, आपको इनपुट दे दूंगा. So पहले the intention of the motivation behind this session. So बहुत सारे बच्चों ने गेट एग्जाम ने दे दिया 2026 का, अलग अलग ब्रांचेस से, अलग अलग स्ट्रीम से, whatever the exam you have given, इस पे आपको मार्क्स रेस्पॉन्स शीट अभी तो की रिलीज होने के बाद मार्क्स तो मिल गए, बट आपको ये डाउट्स है माइंड पे, सर अभी मुझको इतना आ रहा है, सर 35 मार्क्स आ रहा है, क्या मिलेगा उसको? 45 आ रहा है, 60 मिल रहा है, उसको कुछ PSU मिल पाएगा क्या सर? So these kind of doubts you might be having in your mind. So based on the data we got it, because बहुत सारे बच्चों हमारा रैंक में रैंक भी चेक किया, सो बहुत सारे बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे के एक सिस्टमैटिक एनालिसिस करके आपको इस सेशन के अंदर we will be giving you all the data, what if your marks is in this particular range, what you can expect. आप लोग NIT पे जाना चाहिए तो नहीं है तो IIT पे जाना, नहीं है तो आप PSU पे जाना, सो कितना मार्क्स आपको सेफ हो पाएगा, those things we will be discussing in this particular session. So अभी तक आप सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, हमने शुरू कर पाओ. So okay, so see here, चलो. So firstly there is no safe mark in the gate. क्वालिफाइंग मार्क होता है, सेफ मार्क नहीं हो पाएगा ना. सो बट द सेफ मार्क विल वेरी फ्रॉम योर गोल टू गोल. कुछ बच्चों के लिए सेफ मार्क ये होता है, सर हम क्वालिफाई हुआ तो ठीक है सर, क्योंकि अब थर्ड ईयर पे है, नेक्स्ट ईयर पे हमने फुल स्टेटम देना चाहिए, उस समय पे मुझको सेफ से ज्यादा आना. सो अलग अलग बच्चों को गोल अलग अलग होता है ना. जैसा आप लोग NIT पे जाना सेफ मार्क अलग होता है, IIT पे जाना सेफ मार्क अलग होता है, PSU पे सेफ मार्क अलग होता है. सो यू कैन सी हियर it is depending on many other factors definitely, and also institute specific का मतलब क्या होता है? So आपको कौन सा इंस्टीट्यूट पे सीट चाहिए. and another thing which is very important, बहुत सारे लोग को IIT तो मिल पाएगा, IIT में आपको जो पसंद है, जैसा आप लोग VLSA भी चाहिए उस केस में आपको मिल पाएगा अपना. आई थिंक चंदन सर ऑल्सो ज्वाइन. बिल्कुल सर. हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? मेरे ख्याल से ऑडियो परफेक्टली सही होगा. बिल्कुल सही से बात बोला सर आपने कि देयर इज नो गारंटी फॉर द सेफ. कट ऑफ तो सबका फिक्स होता है, पर ये नहीं पता होता है कि व्हाट इज द सेफ मार्क्स, राइट? द सेफ मार्क्स विल डिपेंड्स अपॉन द पीपल, राइट? स्टूडेंट, whether he or she want to go into the PSU. If the targeting or anybody is basically targeting for the PSUs, definitely they must require more marks, right? So that they will go into the some specific PSUs, right? People want to go into the top 7 IITs, then their criteria something else, right? उनको जो marks की requirement होगी वो थोड़ी सी अलग होगी. People who want to go into the only the PSU, मुझे सिर्फ M.Tech करना है, it does not make any difference whether it is a IIT, NIT or state level college. They must have the some different criteria. So what is the safe score? It will depends upon the target, कि what the target you guys have, right? तो ये तो सर आपने स्पेसिफिकली बिल्कुल सही किया, सही बताया ये चीज. वन थिंग मोर आई जस्ट वांट टू टेल यू एवरीवन, in this particular session we are going to guide you, right, कि how much marks are basically required for the IITs. Even we can classify the IIT into the two parts. The one is called top 7 IITs, that is called IIT Delhi, IIT Bombay, IIT Madras, IIT Kanpur, IIT Guwahati, IIT Kharagpur, IIT Roorkee. After that there are some new IITs also. In the new IIT, the some IIT have also having the good, you can say the reputation, the terms of placement, in the terms of research, like IIT Gandhinagar, IIT Indore. They have a good reputation. And some other new IITs also, that is called IIT Jodhpur, IIT Bhilai, IIT Ropar, IIT Mandi, IIT Kalkam. So there is a lots of other IITs also, right? So what should be the criteria? How many marks are basically required for those things? Also, we are going to take in this particular session. Yes, sir. Please proceed, sir. Thank you, sir. So again, as Chandan sir bhi bola na, so there is no specific thing like it is always safe, but again it depends on many other factors depending on your requirement, and it is also a variable. It is not same thing in every single year. So आप लोग देख सकते हैं यहीं पे गेट 2026 का ओवरव्यू.
जैसा क्वालिफाइंग के लिए कितना होना पड़ेगा आपका कट ऑफ. सो लेट्स स्टार्ट विद द कट ऑफ, देन वी विल गो फॉर एनआईटी का कट ऑफ क्या हो सकते हैं, आईआईटी, पीएसयू, एवरीथिंग. ओके. सो फर्स्ट कट ऑफ कैन बी एज क्वालिफाइंग मार्क. क्वालिफाइंग मार्क के लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस किया इसके बारे में प्रीवियस वाला सेशन पे. अराउंड 28 to 30 है तो इसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बच्चों के लिए दैट विल बी सेफ. ओके. सो यू कैन सी हियर दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड हियर. आप लोग 28 से शुरू कर सकते हैं. दैट इज द क्वालिफाइंग मार्क. सपोज अगर थर्ड ईयर पे है तो आपको कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए तो 28 विल बी द क्वालिफाइंग मार्क इन एंड अराउंड. एंड 40 प्लस मार्क्स तक आपको इट डिपेंड्स ऑन द डिफिकल्टी लेवल. एंड इस साल का ऐसा होता है 28 के आसपास ही हो सकते हैं इसी इलेक्ट्रिकल के लिए. वी कैन से दैट. एंड सिमिलरली सी हियर, if it is a computer science, it might be go up to 34 also. And it depends again on the branch specific. So but EC electrical के लिए 25 to 28 के आसपास हो सकते हैं आपका qualifying marks. So then you can see here the safe marks. This is your favorite destination compulsory. So सबसे best ये होता है IISc बैंक. So आप लोग IISc बैंगलोर पे जाना चाहिए तो so you must be in general ये होता है top 100 पे होना पड़ेगा. नहीं है तो it depends on the specialization you are going. They will be conducting the interview. अगर आप लोग exceptional performance interview पे दिया तो जैसा आपका गेट सही से नहीं हुआ तो भी उस केस में you have proved your exceptional skill. जैसा आपका mathematical problem solving skill सभी चीज आपने exceptionally prove किया तो उस केस में it might be different. But in general you can see because all the toppers will be, most of the cases they will aim for IISc Bangalore. कभी कभी ऐसा भी होता है. आई हैव सीन सम पीपल हु आर इन द टॉप 50 जनरली, they also not get a seat in IISc. earlier days ऐसा होता है, but sometimes later क्या हुआ ना, few students choose instead of IISc IIT, thinking of only placement instead of very strict curriculum and all. So it's again an individual choice I can say. But आप लोग 75 plus हुआ तो you can definitely confidently you can sit in the IISc next year. That is for sure. And if you are, see, this information will be useful if you are aiming for GATE 2027 also. क्योंकि कट ऑफ का मार्क जो होता है ना, 5 मार्क में भी पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट it is more or less similar in the past many years. If you are in the 70-75 plus marks range means you will be getting to the favorite destination. ऐसा कोई destination है आपको नहीं मिल पाएगा. It can be PSU, it can be IISc, it can be anything. Until unless paper is very damn easy that people are getting more than 90 marks, that is a very rare case it can happen. Okay, so if you are in the range of 60 to 75, mainly for EC students, keep this in your mind. आप लोग 60 का प्लस है तो एक स्टूडेंट भी मैसेज किया, सर मेरा 60 के, एक मिनट, ओके, सो मेरा 61 मार्क्स आ रहा है. आदित्य वर्मा तो मैसेज किया. So you can see here you can definitely in the टॉप IITs फॉर श्योर. टॉप IITs पे आप हो सकते हैं. चंदन सर, आपका व्यू क्या है सर? 60 to 75 मार्क्स में जो लोग होते हैं ना, जनरली द टॉप टायर ऑफ द स्टूडेंट्स, सो व्हाट्स योर सजेशन फॉर देम, व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट? Sir, sure, we can say that people who are basically getting 60 to 70 marks, definitely they are going to get the top 7 IITs, sir. Or note in this year, if you'll feel the trend of the EC student specifically, then in the every year around 60 to 70, this is the marks for the toppers actually. 82 85 तो टॉपर्स के मार्क्स हो जाते हैं सर. जो AR1 आते हैं उसके 84 85 EC के अंदर दिखते हैं, बिकॉज इन दी EC सम ऑफ द सब्जेक्ट्स आर वेरी ambiguous, you can say that, or some difficulty level are more. So the mainly the student who are getting the more than 60 marks, definitely they are going to get a top 7 IITs. Even the IISc के लिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जरूर देखने को मिलेगा. If the people want to go into the IISc, definitely they should have under 100 rank, especially for the EC student. For the top 7 IIT, definitely 60 to 70 के अंदर बीच में मिल जाएगा सर. IISc बेंगलोर जैसे आपने बोल ही दिया सर कि 75 मार्क्स, इवन द मोर देन 70 मार्क्स ऑल्सो द स्टूडेंट, EC स्टूडेंट आर गोइंग टू गेट द IITs. अगर इस साल के ट्रेंड को फॉलो करें सर, if anybody want to observe the trend in this particular area in this year, then you can feel a student who are getting more than 80 marks, definitely they are going to get around under 10 rank, you can say that, in the EC specifically, right? People who are getting more than 70 to 80, वो सर 70-80 के आसपास अंडर 100 रैंक शॉर्ट है उस बच्चे का, राइट? और अगर 60 to 70 के बीच में अगर किसी बच्चे का आ रहा है, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गेट अराउंड लेस देन 500 मार्क्स, मतलब रैंक. सो लेस देन 500 और 300 वी कैन से दैट.
So definitely they are going to get a good IITs. That is the sure shot, right? Now they have a choice, because in the IIT very few seats are for the VLSI. So the people who want to go into the VLSI, definitely the VLSI having the high cutoff, right? So uska bhi trending sir change hota rehta. For example, of people who want to go into the IIT Madras having the high cutoff, then IIT Bombay, IIT Delhi, like that in the trending it's going to happen. बट यहाँ पर कुछ बच्चों को जो टॉप 7 IITs के अंदर नहीं मिल पाते, बट दे आर ऑल्सो अ वेरी you can say that energetic to go into the any good college. They can also choose NIT, top NIT like NIT Trichy, NIT Warangal. These colleges also having the great placement if we are talking about the VLSI specifically. Or sir, if you want to observe the placement data na, then in this year also if you'll observe the placement specifically into the VLSI, then in the sum of the IITs it's more than the CS branch, right? CS से भी ज्यादा देखने को मिलेगा. So definitely it's a good thing for the EC students, sir. Yeah, I think last time also we have discussed this Yes, year sir. highest placement went for VLSA rather than in CS, CSC yes, wise. definitely, sir. Right. So sir, एक बात है सर, जैसा maybe some students who are aspiring for 2027 इनको भी थोड़ा सा ये guidance ऐसा मिल पाएगा. It can be like helping like a guidance. So in general also for EC or electrical engineering students, can we say 60 to 70 or 70 plus if they are aim for means I am not saying that they need to prepare for 70, but if they are able to make their preparation to score 70 plus, so can we say they are definitely in the safer side irrespective of toughness of the papers? Definitely, sir. Definitely. If the people can observe from the last 5 to 6 years, now they can feel people who are getting the more than 60 marks, definitely they will become the safer side. They will definitely get the college or their dream college actually. Right. And nowadays, one thing more, sir, PSUs are also more inclined toward the EC. Right. Earlier, you can feel the EC के अंदर जो vacancy आती थी, that is very less. But now the little bit shift towards the PSU or towards EC student you can feel. जहां पर नो डाउट इतना ड्रास्टिकली चेंज नहीं हुआ, पर जहां पर 5 या 6 वैकेंसी देखने को मिलती थी, नाउ इन दिस ईयर यू कैन फील अराउंड 18 or 20 वैकेंसी इन दोस पर्टिकुलर ब्रांच फॉर द EC. So it's also a good sign for the EC student. तो आगे चलेगा जैसा आपका एडमिशन NIT पे और टॉप ट्रिपल IITs में, बिकॉज बहुत सारे NITs भी है, बहुत सारे ट्रिपल IITs भी है. सो आप लोग को NIT ट्रिपल IIT में एडमिशन चाहिए तो अगेन एक डिटेल्ड एनालिसिस हमने प्रीवियस वाला सेशन पे भी किया. NITs में कौन सा NIT में कितना मार्क्स चाहिए, कितना रैंक चाहिए, आप इस चैनल के अंदर लाइव सेशंस पे जाके देख सकते हैं. बहुत सारे सेशंस आपको काउंसलिंग गाइड करने वाला, प्रिपरेशन गाइड करने वाला सेशन तो ऑलरेडी है. So, but now we can say marks point of view, we may say 40 to 50 plus marks. So, if you are able to score at least कम से कम 40 to 50 plus marks आपको मिल रहा है तो, then around 55 and something, you can be safe into NITs or some triple IITs also, because some triple IITs they will conduct their own exam and also they will also consider your gate score. अगर आपके पास gate score हुआ तो you can bypass the written exam. नहीं है तो भी see you can give your own exam. जैसा आपका 40 plus marks मिल रहा है, so that 40 plus marks is not deciding your capability. 40 plus marks ऐसा हो सकते हैं you have given your best, but कभी कभी ऐसा होता है ना silly mistakes के कारण और एग्जाम का समय पे whatever the kind of stress और टाइम मैनेजमेंट और इजी क्वेश्चंस को आप नहीं देख के आगे वाला क्वेश्चंस नहीं देख के फर्स्ट वाला क्वेश्चंस में आपको टाइम वेस्ट किया, somehow your preparation is good but not able to score much. इस केस में क्या होता है ना, few triple IITs like triple IIT Hyderabad and triple IIT Bangalore also they will conduct their own exam. इसमें आपका प्रिपरेशन कहीं पे कहाँ भी नहीं चलेगा. So whatever you have prepared it will always help you in one way or another way. So in that case you can give a try on your own. So 40 से 50 marks है तो I am not saying you will be in the top NIT, but कोई भी एक NIT तो आपको मिल पाएगा. So you might be sitting in one NIT for sure. And triple IITs also there are बहुत सारे triple IITs है, सारे triple IITs में आपको placement नहीं मिल पाएगा, but triple IIT Hyderabad is very good, triple IIT Bangalore is very good. These destinations you can go on par with IITs or top NITs. You can expect a very good placement here. So let's move further. So PSU, so this is like a favorite destination for many electrical engineering students. जैसे EC वाले बच्चों के लिए, CSC वाले बच्चों के लिए maybe campus placement might be more fancier because of the high pay they are getting, but for electrical or core engineering people like
मैकेनिकल, सिविल, for these people PSUs might be the favorite destination. So आप लोगों के लिए आप देख सकते हैं 2026 में सेफ गेट स्कोर कितना हो सकते हैं. So if you want to enter into PSUs, so आप लोग देख सकते हैं CSC के लिए you must be in the range of 850 to 900. It will be the same because number of PSUs recruiting for computer science engineering will be less. But second thing you should understand, for many of the PSU students, see M.Tech might be the top priority, PSU may not be the top priority. उस केस में आपको चांस मिल सकते हैं. But it is similar to IISc Bangalore का कट ऑफ 850 to 900 का स्कोर आपको मिल रहा है, तो then उस केस में आप एंटर हो सकते हैं. Then for mechanical engineering, you can see, as I told you, for mechanical and civil, there will be relatively more number of posts for the core engineering sector. So, आप लोग को 750 to 800 you can enter. So, you can take it as a generic data also. It is for 2026, but it is the similar kind of trend happening in the past many years also. Civil engineering, you can see 700 to 760, and electrical engineering 780 to 830. So, you can see here the top PSUs like IOCL, NTPC, BHEL, all the Maha Marathon companies, Navaratna companies, all these companies will be having the highest cutoffs because that is the most preferred power grid जो होता है ना for electrical engineering students, for all of them. And again, all these are variables. कभी कभी जैसे चंदन सर भी बोला previously, if a particular year में बहुत ज्यादा opportunities उस particular PS पे मिल रहा है, so बहुत सारे लोग उस particular साल पे retire हो रहे हैं, luckily then new people might be getting more opportunities in that particular year. Suddenly some new company might join in the recruitment through GATE exam. Some people might conduct their own exam. Some people don't want to take this whole examination process. Suddenly they will release the notification. These अभी भी 2024 गेट एस्पिरेंट्स जो होता है ना, उनको अभी भी मौका मिल रहा है. लाइक रिसेंटली CERT नोटिफिकेशन, सभी नोटिफिकेशंस में दे आर एलिजिबल फॉर द PSU. सो इट इज ए क्वाइट वेरिएबल, बट यू कैन से दिस इज सेफेस्ट थिंग वी आर सेइंग. So branch wise computer science 65, जैसे ऑलरेडी चंदन सर भी यही डिस्कस किया ना हमने previously. If you are in the range of 70 65, उस केस में you will be definitely on the safer side irrespective of your branch. You can see for CSC also similar, and for EC engineering also it is more or less similar. If you are 60 plus, definitely for electrical and also it will be the same, and EC also it will be the same, and but civil engineering it will be relatively lower case, so 55 to 65 you can say. So you can see here also, if you are, I'm just speaking about IITs, you can see some 15 to 20 marks lower you can be in the NITs. So आप लोग which particular range पे आपका marks मिल रहा है, so those who are commenting, just check your marks accordingly. You can prepare for your destination also, you can plan accordingly. So this is the same thing again, but category wise आपका कुछ reservation है, तो उस केस में आपका scores कितना हो सकते हैं, then you will be having some sort of relaxation for sure, right? So आपको general category में definitely whatever we have discussed that should be applicable for you. So आपको EWS और OBC है तो थोड़ा सा moderate relaxation आपको मिल पाएगा, and if you have further reservation also उस केस में ज़्यादा benefit मिल पाएगा. So but this is whatever we have discussed in the previous case is the highest possibility. So if you are safest, I can say if you are able to score that particular marks, you will be definitely safe. You can see here 70 plus में CSC का in this case undoubtedly safe. So if you are able to get 70 plus marks in the gate, but कभी भी ये mistake गलत मत करना. आप लोग 2027 का एस्पिरेंट है तो कभी भी एग्जाम लिखने समय पे, प्रिपरेशन करने समय पे आप टारगेट रखना कंपलसरी. एग्जाम लिखने समय पे कभी भी ऐसा मत होना अब मेरे को इतना मार्क्स ही आएंगे तो देन ओनली आई विल बी गेटिंग द रैंक. सो कंपलसरी वेदर आई विल बी गेटिंग द आंसर और नॉट, मैं इतना मार्क्स के लिए मैं आंसर करता हूँ. प्लीज डोंट थिंक लाइक दैट. चंदन सर. Yes, sir. Yes, sir. For the category wise, if we discuss, by many students, sir, जैसा prepare करने समय पे they might be thinking like we are saying that 70 is the safest score. So what I am saying is like if you are preparing, you can have a target marks, but while writing the exam, never keep any target because sometimes paper is very tough. It is unpredictable. So true. you may think that if I don't get the 70 marks, I don't get the rank, and giving the negative marking, unknown answers will take the entire rank system. So what's your take on that, sir? Sir, definitely. I remember the gate paper of 2012, I think, which is conducted by IIT Delhi. That was the toughest paper in the history of the Delhi, EC. sir, toughest. Yes.
toughest paper. In those particular area, one of my friend secured around 52 rank, 52 marks is basically right in those particular paper, right? और उसका उसके बाद भी सर under 100 rank था, right? 52 marks पे. So nobody knows. People who have prepared in well manner, if you'll go into the examination, don't think about the marks. आप marks के बारे में मत सोचिए. आप बस इतना सोचिए कि you have to perform well into the examination. That's it, right? If the questions, if any question will come in front of you, and you are able to solve it, just solve it. Don't make कि ठीक है कुछ भी guess कर रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं. और सर पेपर का लेवल इजी है कि टफ है, ये जब स्टूडेंट अच्छे से प्रिपेयर होते हैं ना, उनको 4-5 क्वेश्चन में पता चल जाता है सर. So only they have to give their best. That's it, right? वहां पर कोई नंबर्स दिमाग में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज यू विल डू अ लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स. सपोज ऐसा भी हो सकता है पेपर बहुत डिफिकल्ट है सर, or maybe the student are basically writing the paper in those particular things. They can say, okay, I just want to get the 70 marks to go into the safe side. And now the paper was very difficult, in which the 60 marks the people are basically getting the under 100 rank. So वहां पर वो मिस्टेक करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, राइट? सो बीमा सर ने बहुत ही जबरदस्त थॉट दिया कि राइट बिफोर द एग्जामिनेशन हॉल यू कैन थिंक, but when you will enter into the examination hall, whenever you're writing the paper, don't think any number. Do your best. That's it. Yes, sir. किसी एक स्टूडेंट का डाउट है सर, बिकॉज यू नो मोर अबाउट द सीएससी, आपने सीएससी का बहुत सारे एनालिसिस किया सर. शिफ्ट 2 में 57 मार्क्स आ रहे हैं इनको शिफ्ट 2 पे. सो व्हाट आर द चांसेस ही इज आस्किंग? सर इन द शिफ्ट टू 57 मार्क्स मींस अप्रोक्सीमेटली 2 और 3 मार्क्स जो है वो डिटेक्ट हो जाएंगे. 2 और 3 मार्क्स इज गोइंग टू बी डिटेक्टेड. सो 57 मींस शी इज गेटिंग 55 marks actually. So in the 55 marks in this year, definitely you will get a good college, but not top 7 IITs. Top 7 IIT in the CS is a little bit difficult, but yes, decent NIT she will get actually. ओके सर, ग्रेट. सो लेट्स कंटिन्यू. आप लोग देख सकते हैं हियर कैटेगरी वाइज भी 10 मार्क्स आप रिलैक्स हो सकते हैं. अराउंड 50 to 55 to 70 marks will be safer for you. So finally we can also see here how to use the safe marks. जैसा हमने बता दिया ना, सेफेस्ट टारगेट आप रखने के लिए, जैसा आप लोग टेस्ट सीरीज देने समय पे, आपका प्रिपरेशन चलने समय पे, even though you have prepared all the subjects, you will not be able to score 100% for sure. एक्सेप्शनल केसेस ये होता है, बार बार एग्जाम देने लोग को ऐसा होता है, जैसा 5 बार दिया केवल रैंक इंप्रूवमेंट के लिए वो लोग दे रहा है, उस केस में आपको 90 मार्क्स भी होता है. एक दो एक्सेप्शंस, बाकी लोग जनरली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द गेट एग्जाम 70 to 80 is the highest top marks you will be getting it. I am saying for a normal student, it's a, like if you have written GATE exam 10 times, उस केस में अलग बात होता है, ठीक है. So but see, so safe target रखना, प्रिपरेशन का समय पे सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करो, बट क्रॉस चेक करने समय पे आप एग्जाम दे दिया, इवन यू हैव प्रिपेयर्ड ऑल द टॉपिक्स, एग्जाम समय पे एक दो क्वेश्चंस ऐसा होता है यू डोंट नो, इट इज अ क्वाइट नेचुरल थिंग, और एट दैट टाइम इट विल नॉट स्ट्राइक टू यू. सो हाउ मेनी मार्क्स यू आर गेटिंग, यू कैन क्रॉस चेक इट. सो दिस इज हाउ यू शुड यूटिलाइज द इंफॉर्मेशन. सो एंड आई मीन दिस इज फॉर एस्पिरेंट्स आई एम सेइंग, और ऑलरेडी आपको इतना मार्क्स तो मिल रहा है. सो उस केस में आप लोग क्या करना, अब ऑफिशियल भी कोई भी नोटिफिकेशन मिल रहा है, इमीडिएटली यू शुड ट्रैक दैट. You should apply for it, whether it is in COAP or while applying the COAP, which applicant. So first round itself you might be knowing it. Suppose your score is around 500, you know in IIT Madras you will not be getting the VLSA. Don't waste time in that. It is extremely impossible case, leave it. If you are just near, please, you can still give it a try. That is because there is some uncertainty definitely possible, right? So similarly while studying also, कीप योर इन योर माइंड, आप लोग ये रखना पड़ेगा सेफ मार्क मिनिमम तो मैं इतना तो स्कोर करना, इसके लिए मैं मेहनत करता हूँ. एग्जाम समय पे कोई सेफ मार्क नहीं होता है, इवन 30 मार्क्स विल आल्सो गिव यू द गेट रैंक समटाइम्स. ओके, सो द ट्रेंड विल चेंज every single year, but on an average we are speaking the safest possible thing. So that's it. So finally आप लोग हमेशा एम है करना 2027 का एस्पिरेंट है, तो आप लोग 2027 पे give your best. सोचना पड़ेगा what will be the highest target. जैसा
इन IIT Madras this year M.Tech placements में M.Tech A पे 1.1 crore पैकेज मिल गया. So आप लोग ये आपका माइंड पे रखना, नेक्स्ट ईयर दैट इज माय टारगेट, वहीं पे जाना चाहिए, वहीं पे जाना चाहिए, वहीं पे जाना चाहिए. तो क्या करना, इतना मार्क्स डेफिनेटली आई वर्क, डोंट कॉम्प्रोमाइज, बिकॉज अभी तो 11 मंथ्स के ज्यादा आपका पास टाइम है ना, उस समय पे डोंट कॉम्प्रोमाइज फॉर सेलेक्टिव प्रिपरेशन और एनीथिंग. मेक ए टॉप बेस्ट रोड मैप and prepare every single subject, give your best. ठीक है, so you can see here NIT पे इतना होता है. This is overall conclusion what we have discussed. NIT पे 45 to 50 and IITs पे 60 to 75 and PSU का score. So that is about all the analysis or the marks you can aim are based on the marks you got it, what you can expect. I'll be answering your questions from the chat box also. Before that, I think Sar is also having some other classes, so Sar might left. So that is about what I want to give you from my side or our side. ये सभी चीज, ये सभी information use करके आपका preparation पे positive भी जाने के लिए all these things will be definitely helpful for you. So utilize this information to prepare properly and don't waste much amount of time only on the analysis part. आप लोग prepare करने समय पे ज्यादा time एनालिसिस पे मत रखना, एक ओवरव्यू आपके पास होना पड़ेगा. दैट्स इट. Remaining all time devote for preparation only. Don't overanalyze the things. We always do the analysis and give you the best. Just utilize it and devote more and more amount of time for preparations. Okay. And अभी हमारा सारे GFG courses में 40% का ऑफ चल रहा है, होली का ऑफर आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं. आप आपका हमारा वेबसाइट पे आके यू कैन सी द लोएस्ट पॉसिबल फीस यू विल बी गेटिंग द गेट कोचिंग by the top educators. So unbeatable price पे आपको below 10,000 पे you will be getting the gate, means it is not a joke. I mean that is double worth I can say. And इस पे आपको live support मिलेगा, बहुत सारी चीज, placement का support मिलेगा, सभी चीज मिलेगा. If you want to join, don't delay your decision. So I want to take your questions, 1-2 questions, and I'll be ending the session. So sir, I'm interested. Rahul, I think 61.33 is commendable. You can give a try. You'll be getting it for sure, because a relatively new branch है ना quantum computing पे. Even it is a trending branch, many people may not opt for it because it is relatively new, they want to test it. So you can give a try, it's a good try. So Rahul, interview preparation sessions, we will be planning that. So Pankaj, EC 50 marks का मैंने हमने डिस्कस किया ना. So IIT Hyderabad, Ranjan, IIT Hyderabad के लिए अलग से हमने एक dedicated sessions कर पाऊंगा. So whenever the notification out, everything we will discuss session. जैसा Astush sir is doing IIT BHU का session and अंकुर सर ने किया IIT Madras का session and चंदन सर ने किया IISc Bangalore. Like that, every single IIT we will be covering one by one. Don't worry about it. So Sas. Mukherjee 27.3 qualify or not means maybe you might be in the edge, so you need to wait for the March results. Yeah, Mrityunjay, you will be getting it. So thank you very much, guys. See you all with one more session. So every day you will be getting these kind of sessions. So please subscribe to channel if you have not yet subscribed and like this session. Thank you.